Good morning, ma'am. Good morning. People haven't joined yet. Only two of you are there, Pratyus and Satyam. Okay, Wait for 2 more minutes, then we will be starting. Switch on your camera, everyone. Satyam, Pratyus, Rohit, camera on करिए. Good morning, ma'am. Good morning. प्रेजेंटेशन वाले आज नहीं आए हैं? No. No, ma'am. Okay, then better read and finish those 3 chapters were left, right? Okay, ma'am. तो पढ़ के खत्म करिए. दवाई तो दे दिए. Again, chapter 7 is again very important section for you all. Being a PGDM student, marketing में कैसे हम लोग successful हो सकते हैं, वो इस chapter में आपको पता चलेगा. Chapter 7, 6 तक तो कर लिए थे आप लोग. ये लोग हैं कहाँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में भी तो नहीं आ रहे ये लोग. कौन है? सरोज और कौन कौन थे? आज इनका टर्न था. HRM की क्लास में भी वो लोग नहीं आ रहे हैं. मैम शेड्यूल चेंज होगा तभी आएंगे सब. कौन सा शेड्यूल चेंज क्यों होना है? शेड्यूल का मैम जैसे 3 क्लास उस वक्त हो रहा है जब आपका क्लास हो रहा है, और 5 क्लास उसमें हो रहा है. मतलब कोर्सेज जो एंड होने वाले हैं ना मैम, तो उसके बाद थोड़ा शेड्यूल चेंज होगा ना, तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग आएंगे उसको. हम लोगों ने कहा मैम इन लोगों को कि अभी मैं कुछ मतलब ये कोई इशू है ही नहीं. कोई इश्यू नहीं है मैम, बस बहाना. जिनको क्लास करना होता है वो आ ही जाते हैं. ओके, लेट्स प्रोसीड. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे हाउ टारगेट नोज, यानी MWF में सिर्फ 4 सब्जेक्ट एक मेरा ही चल रहा है. अदनान सर का भी तो कोर ही सब्जेक्ट है. यस मैम, वो ऑपरेशन मैनेजमेंट कोर्स सब्जेक्ट है. यहाँ 2 पेपर चल रहा है, कोर पेपर. उनसे उन लोग को लेना देना नहीं है. लेट इट बी. हाउ टारगेट नोज व्हाट यू वांट बिफोर यू डू, इस चैप्टर में आप लोग देखेंगे. यहाँ पे एक सिनेरियो है कि कैसे स्टैटिशियन डेटा कलेक्ट करते हैं मार्केट में और सक्सेसफुल होते हैं. मतलब कस्टमर्स की हैबिट को अगर हम रीड कर लें, ठीक है, इस चैप्टर में यही बताया जाता है कि कस्टमर के हैबिट फॉर्मेशन को अगर हम रीड कर लें कि क्या कस्टमर पसंद कर रहे हैं, कि कैसे कोई चीज लाइक कर रहे हैं, कैसे कोई चीज लाइक नहीं कर रहे हैं,
वो सारा चीज आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। इसके अलावा आपको एक म्यूजिक है हे या कर, ठीक है, उसमें बहुत ही फेमस आर्टिस्ट, फेमस सिंगर हैं, ठीक है, तो वो ऐसा अजम्पशन था कि वो एक हिट होने वाला है, फाइन, बट ऐसा हुआ नहीं। तो क्या रीजन है, कैसे वो हिट नहीं हुआ और फिर क्या हुआ जो हिट हो गया, ये सारा चीज आप इसमें देखेंगे, राइट। यानी बेसिकली आपको कैसे, अगर कोई भी चीज आप या प्रोडक्ट या कुछ भी लॉन्च अगर करना है, या अगर आप मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो कैसे आप सक्सेसफुल हो, ये चीज आप इस चैप्टर में जान सकते हैं। हाउ टारगेट नोज व्हाट यू वांट बिफोर यू डू, ठीक है। व्हेन कंपनीज प्रिडिक्ट एंड मैनिपुलेट हैबिट, प्रिडिक्ट करना और फिर मैनिपुलेट करना, राइट, ये इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम हियर। सत्यम, यू कैन स्टार्ट। Okay, ma'am. Andrew Paul has just started working as a data expert for Target when a few colleagues from the marketing department stopped by his desk one day and asked the kind of questions Paul had been born to answer. Can your computers figure out which customers are pregnant, even if even if they don't want us to know? Paul was a statistician. Sorry. His entire life revolved around using data to understand people. He had grown up in a small North Dakota town, and while his friends were attending 4-H or building more model rockets, Paul was playing with computers. After college, he got a graduate degree in statistics and then another in economics. And while most of his classmates in a econ program at the University of Missouri. सत्यम, बैकग्राउंड आवाज बहुत आ रहा है। प्रत्युष, यू बेटर रीड। आफ्टर कॉलेज। Yes, ma'am. आफ्टर कॉलेज। After college, he got a graduate degree in statistics and then another in economics. And while most of his classmates in the econ program at the University of Missouri were headed to insurance companies or government bureaucracies, Paul was Paul was on a different track. He had become obsessed with the way economists were using pattern analysis to explain human behavior. Paul, in fact, had tried his hand at a few informal experiments himself. He once threw a party and pulled everyone on their favorite jokes, and then attempted to create a mathematical model for the perfect one-liner. He had sought to calculate the exact amount of beer he needed to drink in order to work up the confidence to talk to women at parties, but not so much that he would make a fool of himself. That particular study never seemed to come out right. But those experiments were child's play. He knew to how corporate America was using data to scrutinize people's lives. Next slide में कीजिएगा. Paul wants Organize people's life, but those experiments were child's play. To how corporate America was using data to scrutinize people's lives. What is a scrutinize? Scrutinize. मैम दोबारा से चेक करना उसको। Not दोबारा से चेक करना, just to investigate very carefully. हाँ वही। ठीक है, उसको हाँ बहुत केयरफुली इन्वेस्टिगेट करना कोई भी पीपल के लाइफ में, ठीक है। वो डेटा से पीपल के लाइफ में स्क्रूटनाइज करना मींस टू इन्वेस्टिगेट ऑन समथिंग, राइट। Better use this word again. This is also very much common. Scrutinize. Paul wanted in so when he graduated and heard that hallmark
The greeting card company was looking to hire a statistician in Kansas City. He submitted an application and was soon spending in his days scouring sales data to determine if pictures of pandas or elephants sold more birthday cards, and if what happens at grandma's stays at grandma's is funnier in a red or blue link, it was heaven. 6 years later, in 2002, when Paul learned that Target was looking for numbers crunchers, he made up the jump. Target, he knew, was a whole other magnitude when it comes to data collection. Every year, millions of shoppers walked into Target 1147 stores and handed over terabytes of information. 1147 stores. 1,147 stores and handed over terabytes of information about themselves. Most had no idea they were doing it. They used their customers' loyalty cards, redeemed coupons they had received in the mail, or used a credit card, unaware that Target would then link their purchases to an individualized demographic profile. Okay, from To here, a, Aditi, you need to turn on your camera and set. मैम कैमरा ऑन है? अदिति को मैं बोल रही हूँ, और सत्यम बेटा यू स्विच ऑफ योर कैमरा। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए भाई पीछे क्या चल रहा है। Either you take रूम वे आसपास लोग ना हो। आपको तो पता है ना क्लास रिकॉर्ड होता है। Be careful in these matters. Okay. Proceed, Rohit. To a statistician, this data was a magic window for peering into customer preference. Target sold everything for groceries, grossing, Groceries. groceries to clothing, electronics, and lawn for furniture, and by costly tracking. People's buying habit, the companies analysts could predict what was occurring within their home. Some occurring नहीं occurring पढ़ेंगे occurring within their home. Occurring within their homes. Someone buying new towels, sheets, sliver. है ना शीट्स। क्या आप नोटबुक बना रहे हैं रोहित? जो मैं आपको बताई थी, आप लोगों को बताई थी इनफैक्ट, एक नोटबुक बनाने के लिए जिसमें we find that any word is difficult for us to pronounce, for me to pronounce. आपको बताया गया था ना, जो मेरे लिए डिफिकल्ट है, जो आपके लिए डिफिकल्ट है, सबका नोटबुक का अलग अलग वर्ड्स रहेगा। आपको लग रहा है कि यहाँ शीट, यहाँ पे इधर अकरिंग को हम गलत पढ़े, ठीक है? तो ये सब एक हैबिट फॉर्मेशन हो चुका है, तो वो अंडरलाइन कर लीजिए कि हाँ इस प्रोनाउंसिएशन को चेक करना है, शीट ये प्रोनाउंसिएशन को चेक करना है, या कोई भी वर्ड जब हमको नया कुछ लग रहा है कि हाँ नया मीनिंग है, पहली बार सुन रहे हैं, वो उस नोटबुक में आप लिखेंगे। ये कर रहे हैं, करना शुरू किए? यस मैम, करना स्टार्ट किए। ठीक है, 1 महीना हो जाता तो लेट मी नो दैट वाज द प्रोग्रेस। एंड अगेन ये चीज भी जरूरी है, जो जैसे आप सेकंड पेज में आप पहुंचते हैं, आपको पेपर 1 से आपको एक तरीके से एक ग्लांस देना है, फिर पेपर 2 तक पहुंचना है। उसी तरीके से जब 10th पेज में पहुंच जाए तो राइट फ्रॉम 10th जब लिख रहे हो, राइट फ्रॉम पेपर 1 टू पेपर 10 आपको एक ग्लांस देना है, ठीक है? यानी हर दिन आपको एक ग्लांस देना है उस नोटबुक में, ठीक है? यू विल फील द डिफरेंस। Okay, proceed.
tools, sets, sliver pens, and foreign dinners. They probably just probably they probably just bought a new house. Probably मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या बताया जा रहा है, अगर कोई कस्टमर की हैबिट को रीड करने का डेटा कलेक्शन हो रहा है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि इन जनरल लेमैन उतना उसको समझ ना पाए, लेकिन स्टैटिशियन इन सारी चीजों को प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बंदा नया टॉवल खरीद रहा है, शीट्स खरीद रहा है, सिल्वर वायर खरीद रहा है, पैन, फ्रोजन डिनर, ये सब अगर खरीद रहा है, तो ये गेस वर्क हो जाता है कि हो सकता है वो या तो नया घर लिया हुआ है, और गेटिंग डाइवोर्स विच इज वेरी मच कॉमन बाहर, इंडिया के बाहर। तो दीज थिंग्स दे आर प्रिडिक्टिंग कि हो सकता है ये सब हो, तो अगेन वो आगे टारगेट करना शुरू कर देता है किसी और प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, वो ये बताना चाह रहा है अब तक। ठीक है, कैसे स्टैटिशियन रीड करते हैं कस्टमर को, वो दिखाया जा रहा है। तो अगर आगे आप लोगों की भी कंपनी होगी, ठीक है, इस तरीके से आप रीडिंग करना मतलब कस्टमर्स को रीड करना सीखिए, वो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। सो आई वांट यू ऑल टू फोकस ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस चैप्टर। चलिए आगे बढ़े। A cart loaded up with bug spray kits, underwear, a flashlight, loads of ये फ्लैश लाइट पढ़ेंगे, FL है ना, फ्लैश लाइट। flashlight, loads of batteries, real sample, batteries, real sample, and a bottle of chardonnay, chardonnay, chardonnay summer camp. It's around the corner and mom can hardly wait. Working at Target offered Paul a chance to study the most complicated of creatures, the American shopper in its natural habit. His job was the build a mathematical model that cloud crawl uh, through data and determine which software loved the outdoor and who was more interested in ice cream and romance novels. Paul's mandate was to become a mathematical mind reader, despairing software have it in order to convince them to spend more. From here, Aditi. Then one afternoon, a few of Paul's colleagues from the marketing department stopped by his desk. They were trying to figure out which of Target's customers were pregnant based on their buying patterns. They said pregnant women and new parents, after all, are the holy grail of retail. There is almost no more profitable product hungry price incentive group in existence. It is not just deeper and white people with infants are so right that they will buy everything they need. यहाँ पे न्यू पेरेंट्स को ना गोल्ड माइन बोला गया है। क्यों? एक तो जब एक्सपेक्टेड मदर होती है उनको भी बहुत सारे प्रोडक्ट की जरूरत होती है, और जब न्यू पेरेंट हो जाते हैं तो बेसिकली बच्चे के लिए प्राइस इनसेंसिटिव होते हैं, मतलब वो कितना भी महंगा है डजंट मैटर, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है। राइट, तो इस चैप्टर में वही बताया गया है कि पहले ये स्टैटिशियन को बोला गया है कि ये पता करने के लिए कि कितनी प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, ताकि हम उसको टारगेट कर पाए और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। राइट, क्योंकि दे आर क्वाइट प्राइस इनसेंसिटिव ग्रुप। राइट, प्रोसीड। And toilet paper, socks, and magazines wherever they purchase their bottles and formula. What is more, if a new parent starts shopping at Target, they will keep coming back for years. Figuring out who was pregnant, in other words, will make Target millions of dollars. Paul was intrigued. What better challenge for statistical fortune
target millions of dollars. Poll was introduced. What better challenge for a statistical fortune teller than not only getting inside shoppers' minds but their bedrooms? By the time the project was done, Paul will learn some important lesson about the dangers of preying on people's most intimate habits. He will learn, for example, that hiding what you know is sometimes as important as knowing it, and that not all women are enthusiastic about a computer program synchronizing their reproductive plans. इसको पढ़िए फिर Not से. everyone interns What did you write? synchronizing Scrutinizing. their reproductive plans. Not everyone interns. It turns out things mathematical mind reading in food. I guess outsider could say this is a little bit like Big Brother. Paul told me that makes some people uncomfortable. Once upon a time, a company like Target would never have hired a guy like Andrew Paul as little as 20 years ago. Retailers did not do this kind of intensely data-driven analysis. Instead, Target as well as grocery stores, shopping malls, greeting card sellers, clothing retailers, and other firms tried to peer inside consumers' head the old-fashioned way by hiring physiologists who peddled vaguely scientific hiring physiologists, Physiology है क्या? psychologists Hmm. who peddled vaguely scientific tactics they claimed would make customers spend more. Tactics, Huh? tactics Tactics. they claimed could make customers spend more. They Claimed, claimed. some of those methods who still in use today. If you walk into a Walmart, Home Depot, or your local shopping center and look closely, you will see detailing tricks. They have been around for decades, each designed to exploit your shopping subsequences. Take for instance how you buy food. Chances are the first thing you see upon entering your grocery store and fruits and vegetables arranged in attractive, bountiful piles. If you think about it, positioning produce at the front of a store does not make much sense because fruits and vegetables produce easily at the bottom of a shopping cart. Logically, they should be situated by the registers so they come at the end of a trip. But marketers and psychologists figured out long ago if we start our shopping space by loading up a hearty stuff, we are much more likely to buy Doritos, Oreos, and frozen pizza when we encounter them later on. The burst of subsequent virtuousness, subconscious that comes from first buying butternut squares make it easier to put a pint of ice cream in the cart later. आप आराम से पढ़िए देती है. आपसे कैसे मिस्टेक हो रहा है? आराम से deep breath and then you put your eyeball there only where you are reading. आपका eyeball जल्दी जल्दी भाग रहा होगा. I will take the way most of us turn to the right after entering a store. Did you know you turn right? It is almost certain you do. There are thousands of hours of video tape showing shoppers turning right once they clear the front door. Thousands of ये क्या पढ़े आप? Hours. As a result of this tendency, retailers fill the right side of the store with the most profitable products. They are hoping you will buy right off the bat. Our considered कस्टमर का ये टेंडेंसी होता है जनरली वो गुस्से के साथ राइट टर्न लेता है. राइट जनरल टेंडेंसी होता है. तो अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करना है जो जल्दी निकालना है या ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है तो वो आप उसको वहां पे प्लेस करेंगे. ठीक है. Our considered cereal and
soaps. When they are Soup है क्या? soap, साबुन है क्या? soap, सूप से। soups. सूप को सोप समझ के पी लीजिएगा, When they are तो सूप समझ के पी लीजिएगा। left out of alphabetical order and seemingly at random, our instinct is to linger a bit longer and look at a wider selection. So you will rarely find reason brand next to rice checks. Instead, you will have to search the shelves for the cereal you to grab an extra box of another brand. The people with those tactics, however, These tactics problem. however, the problem with these tactics, however, is that they treat each shopper exactly the same. They are fairly primitive, one-size-fits-all solution for wrangling buying habits. In the past 2 decades, however, as the retail marketplace has become more and more competitive, chains such as Target began to understand they could not rely on the same old bag of tricks. The only way to increase profits was to figure out each individual shopper's habits and to market to people. Wait. One, yeah, They could couldn't not really. rely on the same old bag of trick. उस पे भरोसा नहीं कर सकते, rely depend upon, जिस पे हाँ ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, couldn't rely, भरोसेमंद नहीं है। ठीक है, या फिलहाल यहाँ पे है कि हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, ओल्ड बैग ऑफ ट्रिक्स के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, The only way to increase profits was to figure out each individual shopper's habits and to market to people one by one with personalized pitches designed to appeal to customers' unique buying preferences. unique buying preferences. Unique buying preferences. In part, this realization came from a growing awareness of how powerfully habits influence almost every shopping decision. A series of experiments convinced marketers that if they managed to understand a particular shopper's habits, they could get them to buy almost anything. One study tap recorded consumers as they walked through grocery stores. Researchers wanted to know how people made buying decisions. In particular, they looked for shoppers who had come with shopping lists, who theoretically had decided ahead to time. Okay, सत्यम, अगर आपके साइड आवाज नहीं आ रही है, you can start from here. What they discovered? Okay, ma'am. Who theoretically had decided ahead of time what they wanted to get. What they discovered was that despite those dates, more than 50% of purchasing decisions occurred at the moment our customers saw a product on the shelf. Because despite shoppers' best intentions, their habits were stronger than their written intentions. Let's see. One shopper muttered. What is the meaning of muttered, ma'am? बड़बड़ाना. Shoppers muttered to himself as he walked through a store. Here are the chips. I will skip them. Wait a minute. Oh, the Lay's potato chips are on sale. Hey, put a bag in his cart. Some shoppers bought the same brand month after month, even if they admitted they didn't like the product very much. I'm not crazy about followers, but it's what I buy. You know, what else is there? One woman said as she stood in front of a self-containing dozens of other coffee brands. Shoppers bought roughly the same amount of food each time they went shopping if they had planned to cut back.
Consumers sometimes act like creatures of habit automatically, repeating past behavior with little regards to current goals. Two psychologists at the University of यहाँ तक Southern. समझ में आया ये क्या आप बताना चाह रहे हैं? ये जो कोई शॉपर यहाँ पे बड़बड़ाया कि हाँ मेरे को चिप्स नहीं खाना है, यहाँ पे है कि आई एम नॉट दैट क्रेजी अबाउट फोल्गर्स, और फिर ये लोग क्या किए, नहीं पसंद है फिर भी देखिए चिप्स सेल पे है, दे वे एक्साइटेड, ठीक है, उनको खरीदने के लिए तैयार हो गए। फिर यहाँ पे फॉलगर के लिए उतना क्रेजी नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे देखिए यहाँ सेल्फ कंटेंट डजन ऑफ अदर कॉफी ब्रांड, ठीक है, फिर भी खरीदा गया। तो यहाँ पे ये चीज बताया जा रहा है कि कई बार क्या होता है, कस्टमर नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो कुछ प्रोडक्ट को इस टाइप का मतलब अट्रैक्शन दे करके वो खरीद भी लेते हैं। राइट, प्रोसीड ना। Consumers sometimes act like creatures of habits, automatically repeating past behavior with little regard to current goals. Two psychologists at the University of Southern California wrote in 2009. The surprising aspects of these studies, however, was that even though everyone relied on the habits to guide their purchases, each person's habit were different. The guy who liked potato chips bought a bag every time, but the Folger's woman never went down the potato chips. Esley. Esley means उसके तरफ नहीं गई वो। there were people who bought milk whenever they stopped, even if they had plenty at home. And were there were people who always purchased desserts when they said they were trying to lose weight. But the milk buyers and the desserts addicts didn't usually overlap. The habits were unique to each person. Target wanted to take advantage of those individual quirks, but when millions of people walk through your doors every day, how do we keep track of their preference and shopping patterns? You collect data, enormous, always inconceivably large amount of data. Starting a little over a decade ago, Target began building a vast data warehouse that assigned every shopper an identification code known internally as the guest ID number that kept tabs on how each person shopped. When a customer uses Target issued credit card, handed over a frequent buyer tag at the register, redeemed a coupon that was mailed to their house, filled out a survey, mailed in a refund, phoned the customer helpline, opened an email from Target, visited target.com, or purchased anything online, the company's computers took note. A record of each purchase was linked to that shopper's guest ID number along with information on the everything else they had ever bought. Also, यानी जो खरीदा है वो तो रिकॉर्ड रखता ही है, ये जो target.com का जो काम था वो तो रखता है ही। प्लस इसके अलावा जो आप सोशल मीडिया पे भी जो अपलोड करते हैं, वो अभी आएगा आगे, सोशल मीडिया वगैरह पे जो अपलोड करते हैं उससे वो लोग गेस वर्क कर लेते हैं कि हाँ वो किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और किस प्रोडक्ट को हम उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीड। also linked to the guest ID number was demographic information that Target collected or purchased from other firms, including the shopper's age, whether they were married and had kids, which part of town they lived in, how long it took them to drive to the store, and estimate of how much money they earned if they have moved recently. Which website they visited, the credit cards they carried in their wallet, and their home and mobile phones numbers. Target can purchase data that indicates shoppers'
ethnicity, their job history, what magazines they read, if they have ever declared bankruptcy, the year they bought their house, where they went to college or graduate school, and whether they prefer certain brands of coffee, toilet papers, cereals, or apple applesauce. Means एप्पल सॉस, means एप्पल सॉस, एप्पल का जूस, एप्पल सॉस। oh sorry, applesauce. There are data peddlers such as Infinity graphs that listen to shoppers, online conversations on message boards and internet forums, and track which products people mention favorably. A firm named Rapleaf sells information on shoppers' political leanings, readings, habits, charitable giving, the number of cars they own, and whether they prefer religious news or deals on cigarettes. Other companies analyze photos that consumers post online, cataloging if they are obese or skinny. Obese or skinny means ओबेसिटी, मोटा है obesity. या पतला है, ओबेसिटी तो पता है ना, वही ओबेज है। मोटा है या पतला है, ओबेज और स्किनी। छोटा है या लंबा है, शॉर्ट और टॉल। Short or tall, hairy or bald. फोटो से एनालाइज करते हैं, एनालाइज फोटो दैट कस्टमर पोस्ट ऑनलाइन, कैटलॉगिंग इफ दे आर ओबेज और स्किनी, उसके अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़िए। Hairy or bald, and what kind of product they might want to buy as a result. Target in a statement declined to indicate what demographic companies it does business with and what kinds of information it studies. It used to be that companies only knew what their customers wanted them to know, said Tom Davenport, one of the leading researchers on how businesses use data analysts. That world is far behind us. You had be shocked how much information is out there, and every company buys it because it's the only way to survive. यानी जो डेटा जो कलेक्ट करते हैं उनसे कंपनी डेटा खरीदती भी है, क्योंकि ऑब्वियसली बिना डेटा के कंपनी का सर्वाइव करना मुश्किल है। तो ये डेटा का मतलब समझिए रुतबा है, पूछ है, वैल्यू है। If you use your Target credit card to purchase a box of costly clothes, once a week, usually around 6:30 p.m. on a weekday, the mega size trashed bags every July and October. Target statisticians and computer programs will determine that you have kids at home. Tend to stop for groceries on your way back from work and have a lawn that needs mowing in the summer and trees the drop leaves in the fall. It will look at your other shopping patterns and notice that you something buy cereals but never purchase milk, which means that you must be buying it somewhere else. So Target will mail you coupons for 2% milk as well as for chocolate, sprinkles, school supplies, lawn furniture, rakes. And since it's likely you will want to relax after a long day at work. ये समझ में आया? अगर यहाँ पे अटेंशन देने वाली बात है, it will look at your other shopping pattern and notice that you sometimes buy cereal but never purchase milk. अगर आप अनाज वगैरह खरीद रहे हैं, दाल वगैरह खरीद रहे हैं, लेकिन मिल्क आप वहां से नहीं खरीद रहे हैं, that means कि आप ये कहीं और से खरीद रहे हैं। तो आप ही की कंपनी से खरीदे, टारगेट से खरीदे, इसके लिए क्या करेगी? कूपन देगी, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा कुछ आपको ऑफर देगी ताकि आप वहीं से खरीदना शुरू करें। ठीक है, तो पैटर्न बाकी के लिए, लेमैन के लिए कुछ और होगा, लेकिन ये जो डेटा एनालिस्ट हैं इन लोगों के लिए इस तरीके से डाटा निकालते हैं।
ठीक है. The company will guess what you habitually buy and then try to convince you to get it at target. The firm has the capacity to personalize the ads and coupons it send to every customer, even though you will probably never realize you have received a different flyer in the mail than your neighbors. With the guest ID, we have your name, address, and tender. We know you have got a Target Visa, a debit card, and we can tie that to your store purchases. Paul told an audience of retail statisticians at the conference in 2010. The company can link about half of all in-store sales to a specific person, almost all online sales, and about the quarters of online browsing. At that conference, Paul flashed a slide showing a sample of the data Target collected, a diagram that caused someone in the audience to whistle and wonder when it appeared on screen, bringing it all to the study. फिगर मैम ये पूरा फिगर क्या क्या है ईमेल गेस्ट आईडी तक यहाँ पहुंचा रहा है, जैसे ईमेल, क्लिक थ्रू, ऑनलाइन ब्राउज बिहेवियर, ये गेस्ट आईडी है जिसका आईडी एक ही होता है. ये क्या क्या काम कर रहा है वो चीज शो कर रहा है. ठीक है. ईमेल के मतलब इन शॉर्ट आप ये जान लीजिए कि आप कुछ भी मोबाइल पे कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं, नथिंग इज सीक्रेट. ठीक है. डेटा आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई ले रहा है. चाहे आप ऑनलाइन ब्राउजिंग कर रहे हो, ऑनलाइन कुकी है, फिर आपका मोबाइल आईडी है, मोबाइल कूपन है, गेस्ट लेवल चैनल रिस्पॉन्ड है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है. ठीक है. कुछ भी, इवन आपको ये भी सजेस्ट किया जाता है कि कोई भी अननोन कोई भी लिंक आ जाए ना, कोई भी चैनल आप सर्व करते हैं, कभी आपको ऑफर वाला दिखेगा. ठीक है. ये क्लिक करिए, आपको मिलेगा फ्री आईफोन. कभी देखा है ऐसा लिंक? यू आर सजेस्टेड नॉट टू टच दीज थिंग्स. ठीक है. क्योंकि एक बार आप टच करेंगे, आपके कुछ ऐसा चीज स्टोर हो जाएगा जिससे आपके फोन का सारा चीज सीज हो जाएगा, सारा डेटा सीज हो जाएगा. ठीक है. सीज क्या हो जाए मतलब ले लिया जाएगा. फाइन. आपका कुछ भी पर्सनल रहेगा नहीं. जो आपके आपके फोन से जितना कांटेक्ट पर्सन है आपके फोन में सेव, उसका सारा डिटेल निकल जाएगा. ठीक है. और जितना सेंसिटिव डेटा होता है वो भी आपका पता चल जाता है. ठीक है. तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं वो बिहेवियर शो कर रहा है इससे. The problem with all this data, however, is that it's meaningless without statisticians to make sense of it. To a layperson, to shoppers who both buy orange juice look the same. It requires a special kind of mathematicians to figure out that one of them is a 34-year-old woman purchasing juice for her kid, and that might appreciate a coupon for the Thomas and Tank Engine DVD. And the other is 28-year-old bachelor who drinks juice after going for a run and thus might respond to discount on sneakers. कैसे हम टारगेट करते हैं? दोनों ऑरेंज जूस ही परचेस कर रहे हैं, बट वन इज 34 इयर्स ओल्ड वुमेन और एक है 28 इयर्स का बैचलर. ठीक है. वो जूस इसलिए पी रहा है कि चलो ठीक है दौड़ के आ रहा है तो फिर वो जूस परचेस कर रहे हैं. तो उसके लिए किस चीज का डिस्काउंट अगर आप देंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पे 28 इयर्स वाले के लिए अगर आप स्नीकर का डिस्काउंट देंगे तो हो सकता है आपके ऊपर अट्रैक्ट हो. ठीक है. और यहाँ पे वुमेन को अगर आप देंगे तो ऑब्वियसली वही सेम चीज अगर आप ऑफर करेंगे तो इट विल नॉट वर्क. यू हैव टू गिव अकॉर्डिंगली. ठीक है. वही बताया जा रहा है. लेमैन के लिए शायद ये इंटरप्रेट करना मुश्किल हो, लेकिन हाँ मैथमेटिशियन इस चीज को इंटरप्रेट कर लेते हैं. Paul and the 50 other members of Target's case data analytical service department were the ones who found the habits hidden in the facts. We call it the guest portrait, Paul told me. The more I know about someone, the better I can guess their buying patterns. I'm not going to guess everything about you every time, but I'll be right more often than I'm wrong. By the time
whole joint target in 2002, the analytics department had already built computer programs to identify households containing children and come each November send their parents catalogs of bicycles and scooters that would look perfect under the Christmas tree, as well as coupon for school supplies. ओके, यहाँ 213 से आप लोग पढ़ के रखिएगा, जो नेक्स्ट क्लास में आप लोग डिस्कस कर पाए। ठीक है, आप लोगों का जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से ये चैप्टर, इनफैक्ट तो पूरा बुक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चैप्टर खास तौर पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रीड करिए ताकि नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन हो पाए। तो आई होप जितने लोग हैं आज वो नेक्स्ट क्या है, थर्सडे ऑलरेडी हो गया, सैटरडे मिलेंगे हम लोग। ठीक है, कल तो एचआरएम के लिए मिलेंगे, तो कल तो नहीं होगा डिस्कशन, सैटरडे को डिस्कशन होगा। इस लेवल पे आप लोग डिस्कशन करेंगे क्या पढ़े और क्या आप ग्रैब किए, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट लगा इसमें। ठीक है, पेज नंबर 113 से हम लोगों का डिस्कशन होगा। ओके अदिति, Isn't alone. सत्यम, रिमेम्बर द पेज नंबर। Okay, ma'am.